अच्छी चीज़ है कि पूरी टीम परफॉर्म कर रही है कि कोई एक इंडिविजुअल पे टीम डिपेंड नहीं है। 7 में से 5 जीत गए हम तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। और अच्छी चीज़ है कि पूरी टीम परफॉर्म कर रही है कि कोई एक इंडिविजुअल पे टीम डिपेंड नहीं है। चाहे वो बॉलिंग यूनिट हो या बैटिंग यूनिट हो, उसमें से हमेशा कोई ना कोई लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और पर्टिकुलर मैच डे पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है हमारी और ग्लैड दैट वी इन दिस पोजीशन एट दिस मोमेंट। देयर गुड साइड, आईपीएल में कोई सी भी साइड हल्की नहीं है। कब कौन सी साइड अच्छा खेल रही है, किस फ्लो में है, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरी टाइम वी गो ऑन द फील्ड, गिव अ बेस्ट एंड जो हमारे प्लान्स हैं उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। अच्छा खेल रहे हैं तो वी रिस्पेक्ट दैट, बट एट द सेम टाइम वी लुक फॉरवर्ड टू beat them and win another match. And welcome to another Super Sunday. मैं हूं राहुल मार्किन फीवर 104 FM की तरफ से, and this is a DC Watch Party live for you. आप हमें देख रहे हैं YouTube के सभी चैनल्स पर, फीवर FM के साथ और दिल्ली कैपिटल्स के साथ, और तो और इस वक्त सिर्फ नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली भी, बिकॉज टुडे वी हैव with us an international panel. Wow, man, I'm really looking forward to this discussion. But first of all, some good news. Delhi Capitals has won the toss and decided to bowl first. Another good news is the team remains the same, but our panelists, they keep changing because every time we actually require some different inputs, some different information, lot of facts, and that's why we have some experts with us in this panel today. We start with Mr. Anthony Pizzuto, who's the co-founder on the Sky Podcast Australia. Let's welcome him straight away from Australia. Hi, Mr. Anthony, how are you? I'm very well, and a pleasure to be here. Superb. You're looking really handsome in this Cricket Australia jersey. Wonderful, wonderful, wonderful. Thank you very much. We also have Mr. Nikhil Uttam Chandani, who is a sport journalist and commentator right from Barbados. Oh my God. So a lot of international players with us today. Hi, Nikhil. How are you? Hey, Rahul. Thanks so much for having me back on, and fantastic to be here for hopefully another DC win. Yes, you were very lucky for us. Last time you had you had some great chat with us and we won the match. That was super. We also have Mr. Kushagra Dikshit, who is the co-founder Sports Doin. Hi Kushagra, कैसे हैं मेरे भाई? बिल्कुल बहुत अच्छे राहुल, and thank you so much for having me back here again. Always a fun time with you all and with the Japan. And last but not the least, we have the king of the forest, lion, straight from the jungle, Mr. Rohan. Wow, man, Rohan, आज तो आप कमाल लग रहे हैं, क्या बात है। ये आपने किस पेंट से खुद को रंगा है? थैंक यू राहुल भाई। ये डीसी का जो प्यार है, उसके प्यार से मैंने रंगा है बेसिकली। और मेरे को इतना मजा आ रहा है, इससे लग रहा है कि मैं बिल्कुल जंगल में हूँ, और आज जंगल का राजा जो डीसी है वो आज दोबारा वैसे ही राजा बनेगा और पंजाब को दोबारा हराएगा। वाह जी वाह। सो आज से रिवर्स फिक्सचर्स शुरू हो चुके हैं। ये 8th मैच है, पंजाब के साथ दूसरा मैच है। एंड रोहन, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आज खुशी के आंसू भी आप टपकाएं, क्योंकि पेट खराब नहीं होना चाहिए। We will start with Anthony. Anthony, so Delhi has won the toss and opted for bowling. Right decision for you? Yeah, I think so. We've seen most of the tosses this tournament resulting in the captain choosing to bowl. Be interesting to see, though, in Ahmedabad, if the conditions are a little bit different. We did see in Chennai, it did tend to favour the bowlers a little bit. So I think it's the right decision, but time will tell, I guess. But there are a lot of players who have performed really well this season for Delhi Capitals. If you have to pick maybe a couple of players from the current playing squad whom you have really impressed with from the last 7 matches, who those players would be? I think the first one that comes to mind is Avesh Khan.
is averaging 14.7 at 7.38. And as a young Indian quick that hasn't debuted yet for India, it was the first time that I've seen him in this tournament, and he's really out bowling some of his bigger name, teammates. Nothing to take away from Rabada or Ishant Sharma, but Avesh Khan has been the pick for mine so far, and second in the whole IPL for wickets taken. Mm. So yeah, he's been very impressive, and of course Shikhar Dhawan he's been playing very, very good. Third currently in the total runs, and could go to first if he makes some runs tonight, which we're hoping for. So they're the two that I would pick. Definitely. We are also joined with Nikhil. So Nikhil, tell us, it's been a half of the season so far, and 7 matches so far. Except Delhi. Delhi is almost in the playoffs. Other 3 teams which you think will be able to make it to the playoffs? I think it's a very tough question, Rahul. But with a lot of great teams, as we're seeing in terms of results, I think it's very early to call. But if I had to pinpoint maybe 3 others, I would definitely say Royal Challengers Bangalore for sure. Because I just think the way they've started the season, it's been different this year. I still think they have things to prove in terms of their bowling and in terms of depth that they carry. But I would definitely pick Bangalore. And my other 2 teams would be the most winningest franchises in the Chennai Super Kings, who I think have made some good acquisitions and have continued to back experience and compete at a high level in this tournament. And the defending champions, the Mumbai Indians, and they showed last night why you can never write them off. So I think that would be my 4 looking at it from now, and I don't expect that to change too much. True that. And wow, man, what was the last night's performance? Wow, that was really amazing. But getting back to Delhi Capitals, okay, राहुल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा भाई कि देखिए बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं, लाइक अश्विन, लाइक श्रेयस, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनकी कमी भी महसूस नहीं होने दे रहे हैं. सो टॉकिंग अबाउट द बैटिंग स्ट्रेंथ फर्स्ट, शॉ एंड धवन जो अपनी एकदम रेड हॉट फॉर्म में बरकरार है, स्पेशली द लास्ट मैच दैट वी सॉ. ओह मैन, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? Rahul bhai, I want to say that we are missing Ashwin and our captain Shreyas Iyer, but जो हमारे players perform कर रहे हैं, आपने बोला opening partnership, तो I think we have one of the best opening partnership in all the teams. True. Delhi is the only team which has so much of bench strength. Like सबसे मेरे को लगता है कि सबसे मुश्किल option रिकी पॉन्टिंग के लिए होता होगा कि select किसे करें playing 11 के लिए. We have so much of options. Like ईशान शर्मा, अवेश खान एंड उमेश यादव, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास. लाइक अगर ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं भी हमारी अच्छी चलती तो वी हैव द मिडिल ऑर्डर, मार्कस स्टाइने एंड क्रिस वोक्स इज ऑन द बेंच. लाइक मतलब हमारी टीम जो है वो बेस्ट टीम है इस टाइम और बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है. और आई होप कि ऐसे ही करे. जो हमारा रिवर्स फिक्सचर शुरू हो चुका है उसमें हम 7 विंस लेके ही प्लेऑफ्स में जाए. Wonderful. Kushagra, my next question would be for you. The team goes unchanged for Delhi Capitals. Do you think a change, maybe 1 or 2 was needed, or the team was perfect? Because the last match was really awesome on the same pitch. So is it a wise decision not to change a single player? I think as far as going with the winning combination is concerned, I think most of the captains like to do that. So that's fair enough on Rishabh Pant and the team management in their ideology. I have gotten into a little bit of trouble for suggesting maybe give Nokia a chance, maybe give Vokes a chance over Rabada, or maybe have two foreign faces come in and take one of the Indian lads out. I know I've gotten into a little bit of trouble for saying that, but we did see KG coming back into a little bit of a rhythm up until the last over in the last match, and one can only hope that he finds his rhythm the way he has been for DC over the past few years. And if that happens, that's fantastic. Also, I, as a fan, am still waiting for Andrik Nokia. I'm a huge fan of his, bowling. I'm just waiting. When will we get a chance to see him?
That's only the Maybe only thing that when we go to some other state to play, maybe he has been reserved for some other pitch. So maybe that's the strategy. Talking about strategy, what should be our strategy against Chris Gale? Because what I have heard is KL Rahul is not in the team because of his abdominal pain, so he has been hospitalized. Unfortunately, very unfortunate for Punjab actually, because he was the man in form. But right now we have Chris Gale, one of the most dangerous players when he comes on to bat. So if I ask you, Anthony, what should be the strategy? How to block him? How to stop him making runs? How to get him out at least inside the power play? I think Akshar Patel might be the key here with Chris Gale. He's a very good player of spin, but we haven't seen him in the top form this tournament. So if Akshar can deceive him for flight and get him to play a false shot, I think that might be the best tactic. But who knows? When the universe boss is on, he's one of the best in the world to watch, and we haven't really seen it yet this tournament. So if Akshar or maybe Avesh Khan, the way he's been playing, if one of them can get him early, then Delhi are setting themselves up. Super. Thank you. Nikhil, you must have seen the last match of Punjab versus Bangalore, where the new star, the emerging star Harpreet, just blew them away. 3 top-notch players, one can only dream of taking their wickets, and he did it in his spell. And amazing. Ravi Bishnoi was amazing. Harpreet was amazing. Arshdeep is all the time. He does the job for Punjab. So bowling seems good for Punjab. The only worry is now their batting. So what do you have to say about their batting now? Yeah, I think it's an interesting one. As you mentioned, there's been a clear reliance on KL Rahul in this tournament. That's not been a secret at all, Rahul. But I definitely think I'm interested to see the way that they adapt. They've made a couple of changes. For example, Nicholas Pooran, who struggled a bit. David Malan, who is an outstanding player, averaging 50, the world's best T20 batsman. I'm excited to see how he comes into the fray. I thought it was long overdue that he get an opportunity. And Mayank Agarwal, I expect him. We saw how amazing he was last year. He's been in and out of the team with injury, with form, etc. Hasn't found his rhythm. With the captaincy now tonight, he'll have to bat with a different responsibility. And I think he could get some big runs for sure. So it'll be difficult against a very talented Delhi Capitals bowling lineup, but I think they have the firepower in Gale, Mayank Agarwal, and even David Malan, who can provide that X factor for us. David Malan, who is the number one batsman if it comes to T20s, I think he could give that extra cushion and be the replacement for KL Rahul. And one player, which maybe if you have to choose one player, you have to pick one player out of the current playing Punjab Kings. Whom would you choose? Whom would you pick? I'm going to pick Mayank Agarwal. I think, coming back into the team, he's captain, not a very deep batting lineup as we've seen in the past. We've seen their top order struggle, and then through the middle, they sort of lose their way, like in the last game. So I'm going to pick him. And I think even the keeper, Prabh Simran, I thought he was great behind the stumps, and I've seen his domestic record and the way he's gone about in India, and I expect him to finally come good for Punjab today. All right, so now let's have a look at the playing 11, because Delhi Capitals playing 11 remains the same. Prithvi Shaw, Shikhar Dhawan, Rishabh Pant, captain wicketkeeper Marcus Stoinis, Shimron Hetmeyer, Steven Smith, Akshar Patel, Lalit Yadav, Kagiso Rabada, Ishant Sharma, and Avesh Khan, who is very close to his purple cap. I think just 4 wickets. Okay, coming to Punjab Kings. Prabh Simran Singh, Mayank Agarwal, Chris Gale, David Malan, new change, Deepak Hooda, Shah Rukh Khan, Harpreet Brar, the star of the last match, Chris Jordan, Riley Meredith, Ravi Bishnoi, Mohammad Shami. तो रोहन भाई, आप बताइए सबसे पहले कि भाई ये जो चेंज हुआ है पंजाब की टीम में, how impressed you are with this? So will it help Punjab? I think it will help Punjab, but क्योंकि डेविड मलान
जब आए टीम में तो थोड़ा बहुत हमें है जरूरत, बट वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ बॉलिंग अटैक जो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आज, चाहे वो क्रिस गेल हो, चाहे डेविड मलान हो, चाहे मयंक अग्रवाल हो. वी हैव द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन द IPL. Bilkul ji, bilkul. Now coming to the big battles of today, I think the one battle everybody is looking forward to is Shaw versus Shawmy. Shaw versus Shawmy. Amazing, yeah. So Nikhil, what do you have to say about this battle? I'm really excited about it. Shaw versus Shawmy. Is that for Nikhil? Yes, that's for Nikhil. I think his frame just got frozen. Oh, okay. We will move with the same question to Anthony. Yes, Shaw versus Shawmy. What do you have to say about this big battle? Enticing, isn't it? Both Indian teammates. Prithvi's been in excellent form, but he's going up against one of the best T20 bowlers in the world in Mohammad Shami. But yeah, the way that he's been batting, I definitely have to back him in, and his partner at the other end, Shikhar Dhawan, if they can, continue to make a partnership like they have early on, then that'll set up Delhi for a really nice innings. True. अगली जो big battlers की बात करते हैं, कुशाग्र, I'm really excited to see एक दोनों टीम की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे बॉलर्स हैं जो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं इस समय. बट हम सिर्फ इस वक्त स्पिनर्स की बात करेंगे. DC स्पिनर्स वर्सेस पंजाब स्पिनर्स, किसकी एज स्लाइटली ज्यादा है? सबसे पहले मैं पंजाब से शुरू करना चाहूंगा, बिकॉज हमने देखा लास्ट मैच में भी हरप्रीत, हाउ इफेक्टिव ही हरप्रीत वाज विद हिज लेफ्ट आर्मर्स, एंड Ravi Bishnoi for me has been one of the finds of the last two tournaments in the IPL. He's a fantastic spinner, and he bowls a lot of googlies, which are extremely effective against right-handers, and can also trap the left-handers when he goes wide away from the off stump. So I think they're two very capable spinners. But again, in Delhi, Delhi one of them, they've got Bapu there, Bapu Akshar Patel. So he's a banker of a spinner for us. And he's been continuing his fantastic form which he showed against England in the Test series, and he's brought that form into the IPL post his COVID break, and he's been looking back to his best. He will be ideally supported by Lalit Yadav, I think, in this particular match, and I think it's good for Delhi. They've got two spinners who spin their ball the other way. And with Punjab having a fair few left-handers, as you can see, with Malan coming in now, that increases the left-hander. I think Lalit Yadav could be very, very useful there. So I fully expect the Delhi spinners to dominate the Punjab spinners. You can call it a little bit of a bias, but for sure, I'm going to go for a Delhi advantage here. So it will be a Delhi's advantage today. Let's keep our fingers crossed. All right, मैं रोहन आपसे पूछूंगा भाई, स्मिथ वर्सेस गेल, क्या आज गेल स्टॉर्म एक्सपेक्ट करेंगे हम, या फिर आज स्मिथ का बल्ला बोलेगा? Rahul bhai, we always love to see Gayle Storm in every match, but when the match is against Delhi, we don't want that storm today. And we have a bowling attack कि हम Gayle Storm चलने नहीं देंगे. And Steve Smith, with so much of experience, when he had to knock the ball out of the boundary or he had to hit a six, वो एक experienced player है और अच्छा खेलेंगे. और जो youngster bowling attack है सामने, apart from Mohammad Shami, वो अच्छा खेल के जाएंगे. So I think in the battle between the Gayle Storm and Steve Smith will win one-handedly. Wonderful. Yes, I think we have made contact with Nikhil once again. So Nikhil is back. Okay, so my next question would be you, Nikhil. Harpreet is, I think, will be one challenge. We'll have to see how to tackle him. He's been really in a good form. Of course, Ravi Bishnoi is there, but it's like his second match now. So how to tackle his 4 overs and not lose wicket while he is bowling? Yeah, I think, as you said, he's in roaring form, taking those 3 wickets. But I believe Delhi will back their abilities. They've got right-handers in the squad that will neutralize that threat. They've got a lot of batting stability as well. And I think
if you have someone like a Shimron Hetmeyer, who I believe is a very good player of spin, or even a Marcus Stoinis coming at her and connecting with a few, it could sort of shift him a bit. So I definitely think there will be a key battle, and given what he's just done against Bangalore, the Delhi Capitals will be mindful of that. But I just believe, it's all about they will be mindful at first, but I believe they'll take it as just another bowler and they'll look to score. But if he does start to get wickets, then we might see, sort of a shift in momentum and a shift in approach as well. So it'll be an interesting battle. Quickly before leaving, I would love to ask you if you have to choose one player of maybe from the whole match. It could be anyone from both the sides. I'll start with you, Nikhil. Only one pick from today's match. Because he's in my fantasy team, I'm going with Shikhar Dhawan. Now he's got a good record against Punjab, 37 average, 140 strike rate. So I'm expecting good things from him. Great. So Anthony, one player, if you have to pick one player from the team. Yeah, representing all of Australia, we really want to see Stephen Smith score a big score here. He's been okay, but hasn't had a huge impact just yet. So yeah, that's who I'll be keeping a close eye on and wishing him the best. Definitely. Kushagra, your pick. Nikhil sort of took my pick there, but I'll go with Shikhar's partner. I'll go with Prithvi Shaw. He's been in stupendous form, and I just hope he carries on and gets us to another blockbuster start and maybe carry on to a century this time. Perfect. And before we leave, Jungle के राजा रोहन से भी पूछ जाते हैं, आपकी आज की pick कौन सी है भाई? My pick is sort of a unique one. I'll go with Akshar Patel because he has a magic hand. So I think Akshar Patel will do. Super. आज अहमदाबाद में local boy अपना जादू चलाएगा, but अभी बारी है to thank everybody, all the panelists. It was lovely talking to you. We'll definitely see the match together, but it's time for a small break. We have a video for you guys, so please enjoy this. Very happy, to be honest. The first game, and everyone executed whatever we have practiced, and it's brilliant to see everyone contributing for the team. As a team, we are playing nicely from last 2-3 years. Everyone looks in great frame of mind, and that's what you want as a captain from the team, that everyone is giving their 100%, everyone is happy. स्पेशली मतलब टीम जीती है तो सभी पूरी टीम को कॉन्फिडेंस आता है, कोचेस प्लेयर्स सभी को, और अब यही है कि यही मोमेंटम हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम एज ए टीम। 7 में से 5 जीत गए, हम काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। अच्छी चीज़ है कि पूरी टीम परफॉर्म करेगी, कोई एक इंडिविजुअल पे टीम डिपेंड नहीं। बहुत अच्छी बात है, शुरू में मैच जीतना टीम का मोराल को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। I think we can win the IPL. Simple as that. I might as well go on record saying that now because that's what I'm here for. That's what the players are here for. And we are live once again. मैं हूं राहुल मार्किन फीवर 104 FM की जानिब से, और आप इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें देख रहे हैं एकदम लाइव, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, फीवर एफएम के फेसबुक पेज पर। और आज आपको ये फ्रेम थोड़ा सा बहुत बड़ा दिखेगा क्योंकि जो मेरे साथ यहाँ पे फ्रेम शेयर कर रहे हैं डीसी टोली के मेंबर्स के साथ साथ आज बहुत सारे सुंदर बच्चे भी हैं। तो डीसी टोली के साथ आज डीसी कब्स भी हैं। वाओ, सो डीसी टोली व्हाट्स अप?
आज तो ये रोर नहीं, ये शोर मचाएंगे। आज तो इतने सारे बच्चे हैं जो ऐसा लग रहा है आज मैं किसी क्लास का मॉनिटर बन गया हूँ, और यही सबसे मुश्किल काम होता है, इतने सारे बच्चे हो उनको कंट्रोल करना। बट कोई नहीं, एक एक करके आप सारे म्यूट पे रहना, जिसको बोलूंगा ना बस वही अनम्यूट करना, नहीं तो chaos हो जाएगा। मुझसे क्लास बिल्कुल नहीं समझती है। वैसे अभी इस क्लास के सभी खिलाड़ी तैयार हैं 11 के 11 फील्ड में आने के लिए। अंपायर्स आ चुके हैं, तो अपनी चुन्नियां तैयार रखिए, हम चुन्नी सर्कल करने के लिए तैयार हैं। Whatever blue you're wearing, whatever blue that you have in your hand, start shaking it, showing your blue love towards Delhi Capitals। टीम मैदान में आ चुकी है, हडल बन चुका है। चलो जी, हम भी अपना हडल बनाते हैं, एंड लेट्स सपोर्ट our team, let's show our love towards DC। Wow man, पंजाब किंग्स वर्सेस DC। चलो जी, सबसे पहले हमारे कब्स के पास जाते हैं, DC कब्स के पास। राघव जोशी। हाय राघव, हाउ आर यू? How are you? क्या बात है यार, ये किधर? जस्ट रेज योर हैंड्स। आज फ्रेम इतने छोटे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है। यस, आपके साथ आप बने हैं सुपरमैन, आपके साथ बना है स्पाइडरमैन, राघव एंड क्रिश। अरे वाह मैन। सो आप दोनों के पास आज बहुत तगड़ी सुपर पावर्स हैं। आपके हाथ से जाले निकलते हैं, एंड यू कैन फ्लाई। सुपर यार। सो आपका जो आज फेवरेट प्लेयर है वो कौन रहने वाला है? हु इज योर फेवरेट प्लेयर फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स? आज मेरे फेवरेट प्लेयर जो है वो शिखर धवन रहने वाले हैं, क्योंकि अभी ऑरेंज कैप के लिए सिर्फ उनको 20 रन चाहिए। 20 रन जब वो बना लेंगे तो ऑरेंज कैप फिर से उनके सर पर विराजमान हो जाएगी। और फिर मैं तो उम्मीद करता हूँ आज वो शतक मार दे, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने शतक मारा था पंजाब किंग्स के खिलाफ। हालांकि तब वो किंग्स 11 पंजाब था, लेकिन नाम से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर तो हमारा खिलाड़ी गब्बर आज उसका कैसा चढ़ के बोलेगा। और ये जो आपके साथ बैठे हैं इसका तो मुझे पक्का पता है ऋषभ पंत ही होगा, क्योंकि इसने स्पाइडरमैन वाले कपड़े पहने। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। आपको आता है गाना? कितनी प्यारी स्माइल है इस बच्चे की। व्हाट्स योर नेम? My name is Madhav Joshi. Madhav. So, am I right? Your favorite player is Rishabh Pant or somebody else? Yeah, my favorite player is Rishabh Pant. Yeah, it has to be. Wonderful. So we'll love to see Rishabh Pant and Shikhar Dhawan playing together and hitting some big sixes out of the park. आज बहुत मजा आएगा आपके साथ खेलते हुए देखकर। But right now it's time for a countdown. आज कौन करेगा countdown? Okay. जिसने भी countdown करना है ना, बस let's get started. ईशांत शर्मा के हाथ में बॉल है, and let's start. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओ भाई साहब, आज तो ये रोर नहीं शोर मचा रहे हैं। कोई एक बंदे को मुझे मॉनिटर बनाना पड़ेगा आज। Alright, पहली बॉल डलती हुई यहाँ पर प्रभसिमरन और मयंक इस वक्त खेल रहे हैं। एक बॉल डल गई है, कोई स्कोर नहीं है। ईशांत शर्मा अपना पूरा तजुर्बा अपनी बॉल के साथ फेंकते हुए, एंड लेट्स गेट ऑन टू आवर टीम। भरत, आयुषी, विवान, आहान, ये सब हमारे साथ है। भरत से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाय भरत, हाउ आर यू? आई एम गुड राहुल भाई, यू से हाउ आर यू? बहुत बढ़िया जी। तो पिच के बारे में आज आपका क्या ख्यालात हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? आज पिच को देख के हमने डिसाइड किया है आज पहले बॉलिंग करने का। ऑफ कोर्स पिछला वाला डिसीजन तो बिल्कुल सही साबित हुआ। आज के बारे में बताइए जी। तो पिच, अहमदाबाद की पिच देख के तो यही लगता है कि जो हमारे कमाल के स्पिनर्स जो कमाल की विकेट्स ले रहे हैं,
तो वो ऐसे ही मतलब प्रदर्शन अपना आज दिखाएंगे। और पिच हमने बॉलिंग इसलिए ली है कि बाद में थोड़ी जो हमें ओस जमने की वजह से हमें बैटिंग में एक सहूलियत मिल जाती है, वो मिले। एंड शिखर धवन, जैसे कि हमारे राघव जी ने कहा, शिखर धवन आज शतक मारे पंजाब के अगेंस्ट, तो वही हमारा मतलब पिच को देख के यही रिपोर्ट है कि बॉलिंग करके जल्दी से ऑल आउट करके पंजाब को फटाफट जीते हम। बिल्कुल यार, ईशांत शर्मा बहुत बेहतरीन बॉलिंग करा रहे हैं, 3 बॉल्स करा दी हैं। पर अच्छी चीज ये है कि एक भी बॉल जो है वो मिडल नहीं हो रही है प्रभ सिमरन से, सो विच इज वेरी गुड यार। मतलब एक तो एक्सपीरियंस तो है ईशांत शर्मा का, बहुत अच्छी पेस भी निकाल रहे हैं एंड छका रहे हैं बैट्समैन को, विच इज वेरी गुड। आयुषी हमारे साथ है। हाय आयुषी, हाउ आर यू? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपको देखकर, मैच को देखकर बहुत अच्छा, और भी अच्छा हो गया। 4 बॉल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, बैट्समैन को बहुत अच्छे से बीट कर रहे हैं, मौके बना रहे हैं बार बार आउट होने के। तो कितनी जल्दी आप देखती हैं विकेट आती हुई आज? बस अभी आपने कह दिया, अभी विकेट आ जाएगी बहुत ही जल्द। मेरा मानना है कि पावर प्ले में एटलीस्ट 2 विकेट्स तो आएंगी ही। ऑलराइट, ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। लेट्स गो टू डीसी कप। विवान, हाय विवान, हाउ आर यू? हेलो भैया, हाउ आर यू? ओके, जस्ट रेज योर हैंड। आपका फ्रेम बहुत छोटा है, मुझे दिखते ही नहीं हो। हाय, आपने मुझे ये गब्बर बने हो आप? यस सर, ओ सॉरी यस। एंड आपकी सिस्टर, ये आपकी सिस्टर है? यस सर। भैया ये एल्सा बनी है? एल्सा बनी है या बापी बनी है? Oh wow, so sweet of you. So we need some fairies, some angels today जो आके हमारे सभी प्लेयर्स को ब्लेस करें, ताकि पहले 6 ओवर में कम से कम 2 या 3 विकेट्स तो जाए। सो शिखर धवन, क्योंकि आप शिखर धवन बने हुए आज, तो मैं आपसे एज ए शिखर धवन ही पूछूंगा, आज आप कितने रन मारोगे? 67। चलो ठीक है, बस ऑरेंज कैप आपके पास रहनी चाहिए। ये वाली कैप उतार देना, आपके पास अगर कोई ऑरेंज कलर की कैप है ना, वो पहन लेना आप, ठीक है? क्योंकि आज आप फिर से ऑरेंज कैप जीत जाओगे एंड इट विल बी ऑल योर्स। यस, थैंक यू ब्रदर। आहान आहान कहाँ है? ये जो लेटा हुआ, ये तो नहीं आहान? हाँ, बेचारा लेट गया, उससे ये बोर हो गया कि अभी तक एक भी चौका नहीं बजा है पंजाब की साइड से। क्या हो रहा है? एक्साइटमेंट ही नहीं आ रही। अर्जव के पास जाना। अर्जव, हेलो, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। अर्जव, कैसे हैं आप? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आई एम वेरी गुड। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 7A। सुपर यार, वंडरफुल। तो पहला ओवर बहुत अच्छा निकल गया है, देखो एक भी रन नहीं पड़ा है, मेडिन ओवर गया है। दूसरे ओवर की फर्स्ट बॉल पे पहला रन आया है, और वो भी दूसरा ओवर आज स्टॉइनिस करवा रहे हैं। सो बहुत मजा आ रहा है यार। आपको क्या लगता है कि आज कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाला है? ये पिच पे आई थिंक ललित यादव या अक्षर पटेल, दोनों में से कोई एक बहुत विकेट्स लेगा। एंड अभी तक के दिल्ली के जितने मैचेस हुए हैं, उनमें से सबसे अच्छा मैच आपको कौन सा लगा, विच यू रियली एंजॉयड, जिसे आप बार बार फॉरवर्ड करके बार बार रिप्ले में देखना चाहेंगे? वो कौन होगा? कौन सा एक मैच होगा डीसी वर्सेस केकेआर, जिसमें पृथ्वी, डीसी वर्सेस केकेआर। अरे लास्ट मैच तो बड़ा ही अमेजिंग था यार, जबरदस्त था, सुपर इट वाज। बिल्कुल सही। थैंक यू ब्रदर। चलते हैं जी अगले हमारे दोस्तों के पास। रोहन, रोहन इस वक्त हमारे साथ है। हाय रोहन शर्मा। हाय राहुल भाई। तो भाई देखो, लास्ट मैच में आवेश वाज गुड and now he is a strong contender for the purple cap, and considering के पिछले मैच में हर्षल ने एक भी विकेट नहीं ली,
तो वो 17 पे ही बैठे हैं, बट हमारे आवेश ने पिछले मैच में आई थिंक 1 विकेट ली थी, तो वो और ऊपर चले गए, तो सिर्फ 4 विकेट पीछे हैं। पर्पल कैप उनके पास भी आ सकती है, तो क्या आज के मैच में आ जाएगी या एक मैच का और इंतजार करना पड़ेगा? राहुल भाई, मैं चाहता तो हूँ कि आज के मैच में आ जाए उनके पास पर्पल कैप, बट क्योंकि दिल्ली फैन है और दिल्ली फैन थोड़े जुनूनी होते हैं, ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि आज के मैच में आ जाए उनके पास पर्पल कैप, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैक फ्रॉम माय हार्ट के एक मैच और लगेगा। क्या बात है जी। यथार्थ हमारे साथ है। हेलो यथार्थ, हाउ आर यू? हाय राहुल भाई। तो यथार्थ भाई देखो, लास्ट मैच में पृथ्वी शॉ ने रिकॉर्ड बनाया था फास्टेस्ट, इस सीजन की फास्टेस्ट आईपीएल हाफ सेंचुरी का, और उस रिकॉर्ड को कल पोलार्ड ने तोड़ दिया एक बॉल पीछे करके। तो क्या आज वो रिकॉर्ड फिर से तोड़ सकते हैं दिल्ली वाले? अगर कोई तोड़ेगा तो वो कौन हो? क्या वो शिखर होंगे, क्या वो पंत होंगे, क्या वो पृथ्वी शॉ ही दोबारा होंगे? आई थिंक डेफिनेटली वो रिकॉर्ड पक्का टूटेगा, एंड आई थिंक वो पृथ्वी शॉ दोबारा होंगे, क्योंकि उनको अपना रिकॉर्ड बनाना है कि भाई मैंने ही पहले सबसे फास्टेस्ट 15 आएंगे। तो अगर वो 16 बॉल मार दें तो आई थिंक इट वुड बी द हाईएस्ट इन द आईपीएल रिकॉर्ड। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, केएल राहुल इज द ओनली बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड 15-16 बॉल एंड दैट टू अगेंस्ट दिल्ली। तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत आज बदला देंगे दिल्ली का, जो केएल राहुल ने मारे थे पिछले से पिछले साल। तो आई थिंक पंत इज गोइंग टू बी द गाय हु इज गोइंग टू स्कोर अ फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर दिल्ली। बिल्कुल, दुर्गेश भी हमारे साथ है। हेलो दुर्गेश, कैसे हो भाई आप? मैं बढ़िया राहुल भाई, आप बताएं। बहुत बेहतरीन। तो कंसिडरिंग द लास्ट मैच पंजाब प्लेड वर्सेस बैंगलोर, दैट वाज रियली गुड। वो कॉन्फिडेंस में बहुत हाई है, बट एट द सेम टाइम केएल राहुल इज मिसिंग, सो उनकी जो आई वुड से बैकबोन है जो टीम की, वो मिसिंग है। सो यहाँ पे एक भी विकेट अगर जाती है तो this team will be on their knees. So I think इन दो बैट्समैन को तो बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। बट आपको क्या लगता है कि अगर पंजाब की साइड से कोई बंदा है जो खतरनाक साबित हो सकता है, तो वो कौन है? वैसे आपने बहुत सही बात बोली राहुल, को पंजाब की टीम जो है केएल पे बहुत ज्यादा ही डिपेंड करती है, क्योंकि द की इज वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। अगर अभी वो शायद खेल रहे होते तो स्कोर ये नहीं होता। वी नो कि वो कितने एक्सप्लोसिव है स्टार्टिंग में और पावर प्लेस में। तो आज तो ज्यादा से ज्यादा मैच इनके न्यूली कैप्टन पे ही डिपेंड करेंगे ये लोग, मयंक अग्रवाल पे। वो भी अच्छा खेलते हैं और जहां पर वो कंसिस्टेंसी दिखा देते हैं वहां पर वो आराम से 60-70 रन निकाल लेते हैं। तो आई थिंक पंजाब बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा आज मयंक अग्रवाल पर और क्रिस गेल पर डेफिनेटली। बिल्कुल। चलो जी, अब लक्ष्य के पास चलते हैं। लक्ष्य, दिमाग में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तो बट वी दिल्ली कैपिटल्स के जितने प्लेयर्स हैं और डीसी टोली के सारे जितने फैंस हैं, वी बिलीव इन बेबी स्टेप्स। तो अभी का जो लक्ष्य है फर्स्ट 6 ओवर्स का, 2 ओवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कितना लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं कि कितने में कंटेन करना है पंजाब को फर्स्ट 6 ओवर्स में? हमें पावर प्ले में मयंक अग्रवाल का विकेट सबसे चाहिए, क्योंकि एक वो है जो कंसिस्टेंटली खेलते हैं सबसे अच्छा इनकी टीम में केएल राहुल के बाद। और उसके बाद अगर पावर प्ले में हमें फिर वन डाउन क्रिस गेल आएंगे, तो हमें अगर क्रिस गेल का ही विकेट मिल गया तो हमारा पहले यही टारगेट होगा कि 30 रन के अंडर हमें 2 विकेट तो लेनी है मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल की। फिर हम मैच में वापसी कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। वी ऑल्सो हैव अलंकृता। हाय अलंकृता, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? वंडरफुल वंडरफुल। तो अलंकृता, आपका क्या मानना है, पावरप्ले में कितने स्कोर पर रेस्ट्रिक्ट करने वाली है दिल्ली कैपिटल्स पंजाब को? अभी क्योंकि अभी 8 रन ही बने हैं, तो मुझे लगता है कि अंडर 30 रन अगर रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए, 30-35 रन क्या अंडर, तो आई थिंक सही रहेगा। जो गालों पे जो आपने जो 2 दिल बनाए हुए हैं, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, सुपर। सो कीप सपोर्टिंग आवर टीम, ये बहुत जरूरी है जी। नीला दिल और ये जो नीली मोहब्बत है, ये कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली भेजते रहिए वर्चुअली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी, आगे चढ़ते हैं क्रांति की तरफ। क्रांति भाई, आप बताएं जी, अभी आवेश खान आ चुके हैं मैदान में अपना पहला ओवर लेके।
नहीं सॉरी, ईशांत ओनली, ईशांत शर्मा ही है, बट इसी के साथ पहला छक्का भी पड़ गया। सो फर्स्ट 6 ऑफ आई थिंक फर्स्ट बाउंड्री, तो ये आया 14 रन हो गए हैं, 8 थे, अब छक्का पड़ के 14 हो गए 2.3 ओवर्स में। आपको क्या लगता है बाय द एंड ऑफ दिस पावर प्ले कितना स्कोर होगा? आई थिंक कि बाय द एंड ऑफ दिस पावर प्ले, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ओवर मेडन आ चुका है उससे बहुत बेनिफिट पड़ेगा, और अब वो उसी का प्रेशर है जो प्रभ सिमरन हर बॉल में मारने जा रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी 40-2। 40-2, ओके। दर्शनी, आपकी जो दूरदर्शिता वाली नजर है वो क्या कहती है? दर्शनी, क्या रहेगा पावर प्ले का स्कोर? आई थिंक कि पावर प्ले का स्कोर एटलीस्ट 40 अप्रॉक्स जाएगा, एंड 2 विकेट्स तो होने ही चाहिए एटलीस्ट, और मयंक अग्रवाल ऑलवेज आई थिंक ही शुड गेट आउट फ्रॉम बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो अपने अपने अपनी आंखों के पीछे माइक टाइसन वाला टैटू बनाया हुआ, बहुत ही जबरदस्त। चलते हैं जी कब्स की तरफ। डीसी कब्स छोटे छोटे नन्हे ये इनोसेंट से बच्चे, और इनके जो प्रेडिक्शंस है एकदम सही साबित होती हैं। अभी रुद्र से पूछते हैं। हाय रुद्रा, बताइए जी आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? दिल्ली कैपिटल्स कितने स्कोर में रिस्ट्रिक्ट कर देगी फर्स्ट 6 ओवर्स में? Rahul, Rudra is not there, Parth? Oh, We can Parth? Yo, Parth. Yes. तो आपको क्या लगता है फर्स्ट 6 ओवर्स में, ऑलमोस्ट अभी 3 ओवर खत्म ही हो गए हैं, 14 रन हैं, तो 6 ओवर्स में पंजाब का कितना रन होगा? That I think so around 30 or more than that, maybe. चलो जी, हमें 30 रन से ज्यादा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर फॉर अस। गृहित, हाय गृहित, हाउ आर यू? ओके, इफ यू डोंट हैव गृहित देन विल मूव टू मानवी। आप बताओ जी, आपकी प्रेडिक्शन तो ऑलमोस्ट हर बार सही होती है, तो आपकी आज की प्रेडिक्शन क्या है? I'm thinking 28-1. अभी आपने देखा वैसे 28-1. कोई बात नहीं, बट हम यही चाहेंगे कि ये जो बंदा है ज्यादा रन ना मारे, नहीं तो फिर कल की तरह जैसे पोलार्ड का कैच ड्रॉप हो गया था उसके, उसने मैच जिता दिया, वैसे नहीं होना चाहिए। एंड बस जी, ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द डीसी कब्स। प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा, आज मैच देखने में बहुत फन आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन सब हमारे साथ है, अजीबोगरीब रंगों से, अजीबोगरीब ढंगों से आज हमारी टीम को आज वो सपोर्ट कर रहे हैं। आपको भी करना है। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं, फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, जस्ट कमेंट यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, पंजाब का स्कोर कितना होगा पावर प्ले में, दिल्ली कितने के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लेगी। अगर आपका हुआ सही तो फिर हम आपका डेफिनेटली शाउट आउट देंगे, जरूर, आपका नाम पूरी दुनिया जानेगी। बट अभी जानते हैं जी, अरे यहाँ पे ब्रेक आ गई है, 3 ओवर में 15 रन हो गए। चलो मिलते हैं आपको पावर प्ले के बाद। जोर से बोलो।